नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम सैम्पलिंग के एक बहुत महत्वपूर्ण मेथड को समझने जा रहे हैं। जब पॉपुलेशन बहुत बड़ी होती है, तब पूरी पॉपुलेशन का अध्ययन करना कठिन हो जाता है। इसलिए रिसर्चर्स पॉपुलेशन को छोटे छोटे मीनिंगफुल ग्रुप्स में बांटकर उनसे सैंपल लेते हैं। इससे स्टडी अधिक एक्यूरेट और रिप्रेजेंटेटिव बनती है। अब एक क्लासरूम का दृश्य सोचिए। टीचर बोर्ड पर लिखते हैं, एक्सप्लेन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इन डिटेल। Differentiate between proportionate and non-proportionate stratified sampling with a suitable example. Students सवाल पढ़ते हैं और सोचते हैं कि stratified sampling आखिर कैसे काम करता है। टीचर समझाते हैं कि मान लीजिए किसी कॉलेज में अलग अलग स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स हैं, जैसे साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। अगर हम सैंपल केवल एक ही स्ट्रीम से ले लें, तो पूरी कॉलेज पॉपुलेशन का सही प्रतिनिधित्व नहीं होगा। इसलिए पॉपुलेशन को पहले ग्रुप्स में बांटा जाता है और फिर हर ग्रुप से सैंपल लिया जाता है। यही आइडिया स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का आधार है। अब इसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझते हैं। Stratified sampling is a probability sampling method in which the population is divided into homogeneous groups called strata, and then a simple random sample is selected from each stratum. Each stratum represents an important segment of the population, ensuring that all significant groups are represented in the sample. Stratified sampling is often more efficient than simple random sampling because it increases accuracy and reduces variability within groups. Example: a company has employees belonging to different job levels, such as managers, supervisors, and clerks. The employees are divided into these groups, and a random sample is selected from each group to study job satisfaction. A simple daily life analogy is tasting every layer of a cake instead of tasting only the top layer, so that each layer is represented. Now we understand the types of stratified sampling. Proportionate stratified sampling. In proportionate stratified sampling, the sample size selected from each stratum is proportional to the size of that stratum in the population. Mathematically, it can be expressed as NH equal frac NHN times N, where N total population size, NH equals population size of the H squared TH stratum, N equals total sample size, NH equals sample size from the H squared stratum. Example: suppose a company has 750 employees divided into different job levels, and the researcher wants a sample of 100 employees. The number selected from each group will be proportional to the size of that group. Non-proportionate stratified sampling. In non-proportionate stratified sampling, the sample size selected from each stratum is not proportional to the population size of that stratum. The researcher may select equal numbers or intentionally different numbers from each stratum, depending on the purpose of the study. Example: from the same company of 750 employees, the researcher may choose equal numbers of employees from managers, supervisors, and clerks, even though the groups have different sizes. Now we understand the difference between the two methods. In proportionate stratified sampling, the sample size from each stratum is proportional to its population size, whereas in non-proportionate stratified sampling, the sample size is not proportional to the population size. In proportionate sampling, larger strata contribute more samples, while in non-proportionate sampling, each stratum may have equal or specially chosen sample sizes. Proportionate sampling generally gives more representative results, while non-proportionate sampling is useful when certain groups require special attention. Example: selecting employees according to their population proportion represents proportionate stratified sampling, whereas selecting equal numbers of employees from each job level represents non-proportionate stratified sampling. तो विद्यार्थियों, आज हमने समझा कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग पॉपुलेशन को होमोजीनियस ग्रुप्स में विभाजित करके सैम्पलिंग की एक्यूरेसी को बढ़ाता है। इसके दो प्रमुख प्रकार हैं, प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और नॉन प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। सही मेथड का चयन करने से स्टैटिस्टिकल स्टडी अधिक रिलायबल और रिप्रेजेंटेटिव बनती है।